Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, one of the very important video and lots of basically comment was being asked by the TCS Code Vita contestants, or you can say students, especially from the final year, that what are the opportunity I will get, or will I get the placement opportunity or not, or how many number of questions we will require to solve. Okay, so I will talk about these all important question. So if you are the final year student, then please listen all the points very carefully, friends. So friends, first of all, not talking about the opportunity for the final year students. So is there any placement opportunity? So yeah, there is a placement opportunity, but there is some condition which I will talk soon. Okay. So अगर आपने एक भी क्वेश्चन सॉल्व किया है राउंड वन में, then you will get placement opportunity. But wait for some time. Okay. What is the but condition I'm applying? You can see on the comment. Okay, that in the session 12 code beta, even though we qualify for the first round, but again you have to clear the NQT exam in the ION center. Means friends, if you have qualified in the first round, then you have to give the NQT exam too. Okay, that's the thing I am also telling the lots of time. Okay, and see, you have also written this. Okay, so just clearing first round, you can't get the interview call directly. You have to again sit for the TCS NQT exam. So you may have question, then what is the बेनिफिट ऑफ गिविंग द कोड बीटा? बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि आपको एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगा टू सिट इन द TCS NQT एंड नथिंग. ओके, सो या आपको सैड लगाओ, क्योंकि अर्लियर क्या होता था, यू कैन से सीजन 10 तक क्या होता था कि आपने अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, देन यू विल गेट डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल, नो आई नीड टू गिव द TCS NQT एग्जाम. ओके, सो पिछले साल से ही चेंज हुआ है, 2024 से चेंज हुआ है. I don't know whether this year they will follow same pattern or not, but according to previous year this will valid. Okay, they may change. Okay, so if some changes may come, then I will also provide update here. And if you are interested to get the detail about the NQT exam related to the TCS Code Vita, how it happened, then I will also provide the video related to that. So if you are interested, you can comment here. I feel very happy to make a video particularly on that topic. So अगर आप 4th year student है, तो भाई आप ये याद रखिएगा, राउंड वन आपने क्लियर कर भी लिया तो फिर से आपको NQT एग्जाम देना ही होगा. जस्ट आप कह सकते हैं आपको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू क्लियर द NQT एग्जाम. NQT एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसा नहीं होता, उसके रिलेटिव में बताऊंगा जरूर. ओके, क्योंकि एक जनरल NQT और एक कोड बीटा से NQT होता है, थोड़ा डिफरेंस उसमें होता है. उसके रिगार्ड में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, बात करूँ राउंड 2 का, ऑलरेडी मैंने बताया कि राउंड 2 आपका 10th और 11 जनवरी होगा. जो भी क्वालिफाई करेंगे वो एलिजिबल रहेंगे. ओके, सो दिस इज द थिंग आई वांट टू टेल. सो आई थिंक क्लियर. अगर आपने एक क्वेश्चन किया, देन यू विल क्लियर द राउंड वन, एंड इफ यू क्लियर द राउंड वन, यू विल गेट द TCS NQT opportunity. Okay, you can say extra opportunity, and if you clear that, you will get the interview call on the basis of the TCS NQT exam. So I hope now you are all doubly clear that what are the opportunities. Feel free to ask a comment there. I feel very happy to help. Friends, please make sure you support the channel. Any update you get, then keep your code.